NSCI has been in top form coming into the semi-final match. Two very good teams up against each other. Should be a cracker of a game. The change in pace. Yes, he's searching for that good shape. There is a certain breeze blowing across the ground and is looking for that movement in the air. The delivery that has a good shape on it, that's a stock delivery for Anis. Not exactly fast-paced, but there's a quality left-arm seam bowler, that is Anis. Almost into the roots of the batsman, steering it away into that backward of point area. End of a business-like first over from Anis. They start off with a spinner from the combox end. Kunal with his left arm spinning deliveries. The first delivery on the spot. He goes a little aerial. Not such a good piece of fielding by the man in that deep point area. That was always going to be coming to his left. The first boundary in this innings for Jolly Gymkhana, and that boundary comes off the blade of the second boundary. The first one was a streaky boundary. The second boundary in this innings takes the score to enough elevation on it to take the ball over the head of the man inside the circle in that cover area. Anand Thakkar, as we all know, is not afraid to take the aerial route. He likes to play his strokes. That single takes the score to 11. Winning the toss and opting to bat first. A fine turn round the corner. A quick call from Anand. The single easily taken in the end. Should have been played on the front foot and not the back foot. The catching Anand on the wrong foot with that extra tossed up delivery of his, Kunal.
Well bowled. Well played. End of O number 2. Score at the end of 2 overs, 13 for none. It's going to be Anis to continue from the far end. A steady start here. Lots and lots of cricket left to be played in this second semi-final match. Jolly Gymkhana versus NSCI. That's such a good piece of fielding by the man in that backward of point area at the edge of the circle. That single takes the score to 14. The perfect business-like delivery, ideal line and length, well played as well. Tight in defense. Pranab. Oh, what a good pickup shot. What a good pickup shot and a good backup job as well. Getting his body behind the ball as the second line of defense. Saving 3 runs for the team. Anis to Anand. No need to run for that one. That's a swashbuckling upper cover drive for a boundary. That was in his range and he went after it. Collecting a welcome boundary in the bargain to take the score to 19 for none. Oh, what an immaculate way to open the face of the bat and steer the ball into that vacant squarish third man area for the second boundary on the trot. Up and away is Anand Tucker, growing in confidence, growing in stature. The score at the end of 3 overs, 23 for none. All wickets in hand, looking to lay a rock-solid foundation. Kunal continues. It's going to be Aurangabad Wala on strike. Score after 3, 23 for none. The second semi-final underway. Winning the toss, opting to bat first, Jolly Gymkhana. They're up against NSCI.
The premeditated scoop shot, nicely executed in total control. That was looking on the cards. The first wicket down for Jolly Gymkhana, not able to clear the man inside the circle, not able to put it all along the ground. In the bargain, on his way back to the hut is the captain Anand Thakkar. The first wicket down for Jolly Gymkhana. The first breakthrough for NSCI. The crucial number 3 batsman arriving at the wicket to replace Anand Thakkar, that's Dhruv Patel. Up against Kunal. Quite an early bird here for team NSCI. Oh, that's a good pickup. One of his pet shots. The square cut. He likes to play square of the wicket. Dhruv Patel. The strike back with Pranab. Facing Kunal Toderwal. He's fallen into a good rhythm. A good aggressive fielding. Good body language on exhibition by the fielding unit of NSCI. When you're stationed inside the circle, your job is to save that single. It's a single saving position that they are stationed in at the moment. A change in line, smart bowling, that subtle variation. Nicely played as well. Over. The score at the end of 4 overs, 26 for 1. Early days in this second semi-final match. A change in bowling guard quite early to replace Anish. It is Yash. Yash Tadeshwar.
Oh, the full toss delivery nicely put away. That was begging to be hit away. He obliges the loosener delivery, getting the treatment that it deserved. Taking advantage of the power play restrictions. A good bit of work. That single easily taken. In fact, the second run was on the cards. They are happy with only a single. That single takes the score to 31 for 1. We are into over number 5. 4 balls left. A new man has arrived at the bowling crease. That is Yash Tadeshwar, the man on strike. He too is new. Dhruv Patel. Very slow to the air. The finger goes up. There was no doubt about that. The second wicket down for Jolly Gymkhana. He strikes in his very first over, Yash Tadeshwar. Dhruv Patel is on his way back to the pavilion. A fine catch by the wicketkeeper there. A faint nick. Back to the pavilion without making a statement here. That's Dhruv. In comes Bhavin to replace Dhruv. Time for a resurrection job to be accomplished. The top order had to fire, but yes, two of the top order batters back in the pavilion quite early. Anand and Dhruv. In comes Bhavin to give company to Aurangabadwala. That's a vital breakthrough being provided by Yash in his very first over. Quite an effective bowling change for NSCI. A score at the end of 5 overs, 31 for 2. They've got things under decent control at the moment after being invited to have a go first as a bowling unit, that is Team NSCI.
The thickish inside edge, taking the ball into that fine leg boundary fence. Just look at the body language of the fielders there. Definitely a nick in it. A dropped catch, a missed opportunity there. Aurangabad Wala gets a life. Quite an interesting start here for Adit. The first two deliveries spot on. Looking to bowl up front to the batsman is looking for that early movement. Is looking for that swing in the air. There is a certain breeze blowing across. So he's posing a question or two. He's looking to make this new ball talk. नई गेंद के साथ काफी शरारत कराने में सफलता हाथ लगती हुई दानी के. लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन इस वक्त जॉली जिमखाना के लिए मैदान पर उतरा हुआ है. 2 विकेट्स खोए हैं. रन रेट को भी नियंत्रण में रखा है टीम एनएससीआई में. एनएससीआई अच्छी स्थिति में नजर आती हुई. हालांकि बहुत सारा क्रिकेट अभी भी बाकी है. कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है. That's the end of quite an interesting over from Dani. Score at the end of 6 overs is 38 for 2. Switch in ends for Kunal. Comes into bowl from the far end. The man on strike, that is Pranab.
No, says Sanjay Malhotra, sir. Apart from the bowler and the wicket keeper, nobody was interested in that appeal. Too short. No problems in pulling that ball away into the backward of square leg area. 40-2 it is for the Jolly Gymkhana, opting to bat first after having won the toss. We are into over number 7. 3 balls left. That's well played. Collecting the second run quite easily. वह काफ़ी नज़ाकत से खेला, केवल दिशा दी, इस बात की खबरदारी ली कि वो प्लेसमेंट सटीक है. 4 रन्स मिले. A minimum effort and premier result. That boundary takes the score to 46. Now Pranab holding fort at one end. A very workmanlike stay at the wicket for Pranab so far. There is Kamran in that extra cover area inside the circle. The absolute live wire in the field. One of the finest fielders in this tournament, that's Kamran. End of 7 overs, 47-2 it is. Into the attack, that is Ankit Zaveri. Maybe they are opting to switch ends for Dani, and that is why Zaveri has been brought into the attack. Looks like it. What's the target that team Jolly Gymkhana are looking at? Definitely it's got to be something in the region of 165, 170 plus. They're up against a very good batting lineup like that of NSCI. So for that kind of a batting lineup, you've got to have at least 170 odd runs on the board. Into the attack, that is Ankit Zaveri. A very experienced man in the bowling unit of team NSCI. Man on strike, Pranab Aurangabadwala. That off drive takes the score to
48. The need of the hour for team Jolly Gymkhana is a big solid partnership. Left and right hand combination at the moment, looking to do the needful for Jolly Gymkhana. Bhavin and Pranab keeping the scoreboard ticking in the form of singles. They keep on rotating the strike, waiting for the bat deliveries to play the big shots. That's a fierce hit. No chances. That had a boundary written all over it in bold letters. Aurangabadwala is looking a tenacious player with a capital T. Too close to his body to be playing that cut shot. Was looking to stand and deliver. What a delivery. That's an absolute Jaffa. Peach of a delivery. चारों खाने चित किया बल्लेबाज को. Almost unplayable. End of 8 overs, 54 for 2. The current run rate a little less than 7 and over. Till the drinks interval, Jolly Gymkhana has to ensure that they do not lose any further wicket. When they get together at the time of the first drinks interval in the second semi-final match, I'm sure that Jolly Gymkhana will revisit their strategy. Time to make sure that they do not lose any further wicket. Kunal into his last over maybe, bowling the 9th over for the team. 2 overs from the combox end and the next 2 overs from the far end. The man on strike, that's Pranab. A steady start here for Jolly Gymkhana. They won the toss and opted to bat first. This is one shot he likes to play regularly. He does execute that shot decently, collecting a couple in the bargain. 56. Over number 9 underway.
over the head of Cameron, and that's quite a shot. That boundary takes the score to 60. Over number 9 underway. Slowly but surely he's looking to accelerate, looking to put the foot on the pedal. The very well set Pranab. Now he's got to make this a decent stay at the crease count. He's got to convert this good start into a big knock. He's got a good match temperament as well, so he's got to get everything in place and play a big one. A swish and a miss. A good hands, free flow of the bat. Easily taken. No way Cameron was going to be dropping that one. A strange shot to be playing when you're getting close to the first drinks interval. Not the ideal shot. The third wicket down. The score after 9, 61 for 3. A good transfer of weight, nicely leaning into that shot, caressing the ball into that deep extra cover region. Shubham Vaidya, the new man. No appeal from the bowler there.
That was the biggest giveaway. Too wide. A bolt. End of 10 overs, 65 for 3 it is. 2 extras in those 65. To bowl the 11th over in the post rings interval, change in bowling guard. It's going to be one of the key all-rounders for the team. The left armer Aditya Singh being brought into the attack from the far end. The man facing him, that is Pranab. A good looking shot. A carpet extra cover drive for a boundary. What a way to welcome Aditya to the bowling crease. 69 with that boundary. At some point in time, in the next couple of overs, they'll have to put the foot on the accelerator because you're up against a very good batting lineup like that of the NSCI, and you need to get to at least 170 odd runs. Somehow, team Jolly Gymkhana will have to find a way to get there. From here on,
In 10 overs, NSCI, or rather the Jolly Gymkhana, they will have to put at least 80-90 runs on the board. In the end, happy with only a single. 72 for 3. At the moment, NSCI have kept things under control. किसी भी वक्त हर किस्म की बंदिश को तोड़कर थोड़ा सा आक्रामक तरीके से जॉली जिमखाना कुछ बड़े विस्फोटक रन्स को बटोर सकता है. थोड़ा सा विस्फोटक अंदाज में खेलना होगा. यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपना आक्रामक रंग पेश करना होगा. ग्यारह ओवर के पश्चात 72 रन्स बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर. Ankit's very continuous. He goes away from us. The man on strike, Pranab, the 12th over of this innings getting underway. अब थोड़ा सा आक्रामक तरीके से इस इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करना होगा. थोड़ा सा इस इनिंग्स को बड़े शॉट्स के साथ विस्फोटक रनों से सजाना होगा. एनएससीआई के कप्तान करण चुग और आनंद ठक्कर कप्तानी करते हुए टीम जॉली जिमखाना के लिए. संजय मल्होत्रा सर और विकी नायक ये दो हमारे अंपायर से स्कोरिंग का भार संभाले हुए सुदेश पुराड़कर और आराध्य पुराड़कर ने. और आप तक लाइव पिक्चर्स ले आने की अहम जिम्मेवारी सागर गोपाले अपने कैमरामैन के साथ अदा करते हुए. इस बीच करारा शॉट, 4 रन्स मिले, स्वागत आर्य चौका. इसी लिहाज से थोड़ा सा मोमेंटम गैदर करते हुए इस इनिंग्स में अच्छे रन्स बटोरने होंगे. अभी भी काफ़ी विकेट्स महफूज है. वक्त का तकाजा यही कहता है कि थोड़ा सा आक्रामक रवैया इख्तियार करें. इस तरह के मैचेस में, बड़े मैचेस में अच्छे तेवर दिखाना ये ज़रूरी है. जितना बड़ा मंच उतना और निखर कर आता है एक चैंपियन प्लेयर या एक आधी चैंपियन टीम. बढ़िया शॉट, कितनी नज़ाकत से खेला, बिल्कुल नियंत्रण में थे. थोड़ी सी गलती कर बैठे और देखिए चौके के साथ खामियाजा भुगतना पड़ा अंकित जवेरी को. बहुत ही लेट खेला, बहुत ही जल्द गेंद की लेंथ को भापा, अपनी बैटिंग क्रीज का सटीक इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर कट किया. आला शॉट, मिनिमम एफर्ट और एक चौके की प्राप्ति हुई. 81 रन्स. अच्छा क्रिकेट, सुलझा हुआ क्रिकेट, सूझबूझ वाला क्रिकेट. बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि औरंगाबाद वाला मैच के किस मोड़ पर अपने रुख को बदलते हैं. 35 गेंदों में 46 रन्स बनाए हैं. अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ते हुए. दूसरी तरफ शुभम ने अपने 9 गेंदों में 14 रन्स बना लिए हैं. Yes, definitely they are looking to up the ante here. थोड़ी सी खबरदारी लेनी होगी एनएससीआई ने.
अपनी सजाई हुई फील्ड के अनुसार अब गेंदबाजी करना 100% तरीके से बनता है। बहुत ही बड़ा मंच है ये, सेकेंड सेमीफाइनल मैच है। एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। छोटी सी गलती के चलते जीत का दरवाजा बंद होने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों 12 ओवर्स के पश्चात रन संख्या 86 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 86 रनों में केवल और केवल 2 एक्स्ट्रा से काफी अनुशासन से गेंदबाजी की है करण चुक की टीम ने, यानी कि टीम एनएससीआई ने। बॉलिंग ब्रिगेड के हर नुमाइंदे ने सम्मानजनक गेंदबाजी की है। शिकंजा कसा है, नपीतुली सटी गेंदबाजी की है। मैच को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है अब तक। यश गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल सज्ज होते हुए फार एंड की तरफ से। छियासी पर 3, 12 के बाद कुल मिला के 48 गेंद अब बाकी है। 48 गेंदों में 65 से 70 रन बनाना चाहेगी टीम एनएससीआई। यश तड़ेश्वर ने पहले ओवर में केवल 5 रन से दिए थे, एक सफलता भी उसके हाथ लगी थी। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और राइट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट अक्रॉस करेंगे गेंदबाजी। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है प्रणब ने, लड़ाकू पारी खेली है। इस इनिंग्स को आगे बढ़ाना होगा। पूरी तरह से दारोमदार अब औरंगाबाद वाला के कंधों पर है कि वो इम्पेटस प्रोवाइड कराए। मिस टाइम शॉट जिसके फलस्वरूप कैच आउट हुए हैं। बिल्कुल गलत वक्त पर अपनी विकेट को सौगात के रूप में दिया। सॉफ्ट डिसमिसल, आसान सा कैच। क्रीज से दामन छूटा प्रणब का और विकेट पे अब आगमन हुआ है सुजय शाह। यश तड़ेश्वर के दूसरे ओवर में दूसरी सफलता हाथ लगती हुई। इज मेकिंग अ गुड स्टेटमेंट हियर। The only currency that team Jolly Gymkhana want to deal in is the runs, the quick runs. Sujay Shah, the new man in. The set batsman back in the pavilion. That is indeed a key wicket here for the NSCI. The danger man back in the pavilion. In comes Sujay. Yash picking up a second wicket quite early in his second over. What a delivery to a new man. Perfect. A 9 out of 10 for that peach of a delivery. 87 for 4.
One ball left in over number 13, 87 for 4. Somehow they've got to make it to at least 140, isn't it? In the first semi-final match, MCSRT could put up only 136 runs. In the end, it was definitely a case of 30 runs being shot. After 13, 4 for 87. Changing ends for Aditya Singh as he comes into bowl from the combox end. The commencement of over number 14. Spot on that first delivery from Aditya, given the due respect. They need to break the shackles here, team Jolly Gymkhana. Not a bad thing to give away that single and attack the new batsman. So Aditya will not mind that single being taken. The strike is with the new man, and maybe a little bit of an extra aggressive field to be set for the new man. Tying the noose around the batting order of Team Jolly Gymkhana, the middle order. Things under control at the moment for Team NSCI. Good hands, a carpet off drive. It goes straight to Kamran. No chances there. Oh, such a good shot. Into the gap she goes. Just what the doctor ordered. Piercing the two men in the deep for a belter of a boundary. 93 for 4. They got to continue in that same vein. They got to continue in the same momentum. Somehow they got to find their way to at least 140, isn't it? Good intentions die if they are not executed in the quickest of time. Almost walking into that shot, and that is why he could not have been adjudged a leg before. 93 for 4 at the end of 14 overs.
15वें ओवर की जिम्मेवारी को निभाने के लिए फार एंड की तरफ से यश तलेश्वर अपने पहले 2 ओवर्स में 2 विकेट्स ले चुके हैं। अच्छी गेंद, फ्लैट डिलीवरी, देखे किस तरह से वो आई लेवल के ऊपर से वो गेंद नीचे आई और वहीं पर बल्लेबाज को थोड़ा सा कश्मकश में डाला। अपने चट्टान जैसे अनुभव का सटीक इस्तेमाल किया है इस सेमीफाइनल मैच के बड़े मंच पर यश तलेश्वर ने। अभी तक के क्रिकेट को अगर हम हकीकत के तराजू में तोले तो ये बात सुनिश्चित होती है कि काफ़ी हद तक पलड़ा भारी है टीम NSCI का, लेकिन टीम जॉली जिमखाना भी एक चैंपियन टीम है। इस तरह की स्थितियों में से कई मर्तबा गुजर चुकी है, कोई नई नवेली चुनौती भरी स्थिति नहीं है टीम जॉली जिमखाना के लिए। भली बात ही जानते हैं कि किस तरह से ये वाली स्थिति को नेगेट किया जाए। दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं, मामला पेचीदा हो सकता था, बहुत ही फास्ट थ्रो था। चलिए, कोई भी इजा नहीं पहुंची है यश को, बहुत ही फास्ट थ्रो था। 96 पे 4। ये सटल वेरिएशन था, देखिए किस तरह से गेंद ने अपनी लाइन को पकड़े रखा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉसअप किया था, थोड़ी सी ड्रिफ्ट भी वहां पर प्राप्त हुई। इस मर्तबा बहुत ही ज्यादा शॉट बाल बाल बचे उस लूज गेंद को सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए बल्लेबाज। Good effort goes in vain. In the end, they give away that single. The bowler in his follow through. 15 के बाद 97, आखिरी 30 गेंद, 4 विकेट्स खोए हैं। आदित्य अपने तीसरे ओवर को लेकर 2 ओवर्स में 13 दी है, कोई भी सफलता आदित्य के हाथ नहीं लगी है। फ्लैटर ट्रेजेक्टरी गेंद। अब यहां से आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल में थोड़ी सी कंटेनिंग लाइन और लेंथ को पेश करेंगे आदित्य। विकेट्स के लिए इस तरह की स्थिति में शायद नहीं जाएंगे, हाँ नए बल्लेबाज को बिल्कुल अटैक करेंगे शायद। Terrific shot. Oh, that's a biggie, humongous, a monster hit. Taking on Aditya Singh. Just what the doctor wanted. 100 runs up on the board for team Jolly Gymkhana. 104 to be precise. Sujay on to 8 of 9. He had scored only 2 of the first 8 balls that he faced. उस छक्के के साथ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है सुजय ने और एक बड़ा छक्का बटोर लिया है।
जैसे ही वो छक्का गिरा, फिर से एक बार फ्लैट ट्रेजेक्टरी गेंदबाजी, उस मर्तबा आगे की तरफ गेंद को टॉसअप कराया था। 104 पे 4, 2 गेंद बाकी 16वें ओवर की। तगड़ा शॉट, बहुत ही स्मार्ट शॉट। 4 रन्स मिलेंगे, महंगा ओवर आदित्य सिंह के लिए। अभी तक 11 रन्स दिए हैं अपनी 5 गेंदों में, आखिरी गेंद अभी भी शेष है। अब बिल्कुल खुलकर खेलते हुए सुजय, कप्तान ने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप हर लिहाज से अपना आक्रामक रंग दर्शाए। सेट हो चुके हैं सुजय। 16 ओवर्स के पश्चात 109 रन्स, और ये 109 रन्स खड़ा करने की जद्दोजहद में 4 विकेट्स भी खोए हैं जॉली जिमखाना ने। यश तलेश्वर का स्पेल जारी रहता हुआ फार एंड की तरफ से अपने स्पेल के आखिरी ओवर में देखिए क्या शानदार करिश्मा कर गुजरे हैं यश तलेश्वर बतौर गेंदबाज। 3 ओवर्स में केवल 10 रन से देकर 2 बल्लेबाजों को पेविलियन चलता किया है। आखिरी ओवर देखना है कि इस आखिरी ओवर में किस तरह से गेंदबाजी को अंजाम देते हैं। एक सेट और सुलझा हुआ सुजय अब उनका सामना करता हुआ। देखिए किस तरह से उस गेंद को सुजय की रेंज से लंबा रखा। बहुत ही बढ़िया स्पेल करते हुए यश थालेश्वर एक अच्छा स्टेटमेंट देते हुए इस सेमीफाइनल मैच में बिल्कुल उजागर होकर अपने सर्वोत्तम गेंदबाजी को पेश किया है, जो कि बहुत ही जरूरी था। डीप एक्स्ट्रा कवर में वहां पर प्रोटेक्शन है आदित दानी के रूप में। 1 रन का इजाफा, 111। फिर से एक बार वो नेल्सन आंकड़ा नजर आता हुआ स्कोरबोर्ड पर। 111 पे 4। एमसीसी चैंपियनशिप 2025-26 की ओपन एज टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच टीम एनएससीआई बनाम जॉली जिमखाना। इसके पहले के सेमीफाइनल मैच में टीम पीजे हिंदू जिमखाना ने शिकस्त दी एमसीएसआरटी को और ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करने वाली वो पहली टीम बन चुकी है। इस मैच की विजेता टीम पीजे हिंदू जिमखाना के सामने ग्रैंड फिनाले को खेलेंगे। इस बीच 4 रन मिले, चलिए जहां पर एक ही होना चाहिए था वहां पर 4 मिले। यश ताड़ेश्वर के वो मैजिक फिगर्स थोड़े से बिगड़ते हुए उस चौके के चलते नाखुश है, और नाखुश होना भी चाहिए। 115 पे 4, 2 गेंद शेष है 17वें ओवर में, यानी कि कुल मिला के 20 गेंद आनी बाकी है। क्या ये टीम 135 140 तक पहुंचेगी? सुजय थोड़ा सा खुलकर खेल रहे, लेकिन काफी नियंत्रण में बल्लेबाजों को रखा है। विशेष रूप में यश थाड़ेश्वर ने अपने स्पेल की आखिरी गेंद को लेकर
116 पे 4, अभी तक 17 रन से देखो 2 विकेट्स यश के नाम है। अच्छा यश प्राप्त किया है अभी तक इस सेमीफाइनल मैच में। फ्लैट ट्रेजेक्टरी गेंद, सिंगल रन के साथ अपने स्पेल को खत्म किया है यश ने। टीम के लिए रन संख्या है 17 ओवर्स के पश्चात 117 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 18 गेंद जॉली जिमखाना ने मैच के टॉस को जीत कर बल्लेबाजी का फैसला लिया था। उस वक्त सोच यही थी कि 160 के उस पार जाए, वहां तक पहुंचने से तो रहे, अब कम से कम 135 तक पहुंचना जरूरी है। वापसी होती हुई आदित्य दानी की, पता नहीं क्यों आदित्य को रोका था। एक बहुत ही अच्छे ओवर को अंजाम दिया था, 2 या 3 बार बल्लेबाज को मुश्किल में डाला था, उसके बावजूद एक ओवर के बाद उन्हें रोका गया। सुजय ने 17 गेंदों में 19 रन बनाया है और शुभम वैद्य ने 22 गेंदों में 27। एक सम्मानजनक साझेदारी आगे बढ़ती हुई आखिरी लम्हों में हर बंदिश को तोड़ के विस्फोटक अंदाज में करीबन हर गेंद पर अब प्रहार करना होगा। 6 विकेट्स महफूज है, सुरक्षित है। 140 तक पहुंचना बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे ताकि कुछ तो मिले गेंदबाजों को डिफेंड करने के लिए। एक आशा की किरण तो जागरूक हो। शायद जिस तरह से वो 137 रन बनाए थे पहले सेमीफाइनल मैच में MCC ने, उसी दिशा में ये मैच आगे प्रस्थान होता हुआ। बहुत ही खुशनुमा माहौल है और बढ़िया क्रिकेट की महफिल सजी हुई है। हम महालक्ष्मी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर है, यानी कि वेस्टर्न रेलवे क्रिकेट ग्राउंड। बढ़िया कंडीशन से एक बढ़िया क्रिकेट मैच के लिए। जबरदस्त शॉट, क्या उम्दा शॉट खेला है, बिल्कुल गेंद के नीचे आए, getting the desired elevation, putting it out of the ground. What timing, stand and deliver. What a way to welcome Adit Dani with that blazing 6, 123 for 4. That 140 is looking an absolute possibility now. If they can continue in the same vein, even 150 can be accomplished. The length delivery from Adit, cramping the batsman for room, spot on. A good comeback delivery after being hit for a 6. The first 2 balls from Adit have gone for 7 runs. Quite an experienced man, Adit Dani. Dot ball, 124 for 4. Sujay and Shubham. That's a good partnership, fighting partnership from both the batters. Well bowled. Showing some good character and discipline after being hit for a 6. Adit Dani.
Oh, what a hit. He's a strong man. What a great shot. They're collecting some very useful runs here. They're making good usage of the pace generated by Adit. Bit of a surprise to get Adit back into the bowling attack in this kind of a situation in the death and dying moments of this innings. He bowled a pretty good over, and all of a sudden he was halted. He's going for some runs here. Oh, that is a mind-boggling shot. At the moment, they have no answer to this onslaught from Sujay. Just a look at the way he's cutting loose here. The gathering momentum like never before in this innings. Exactly what the doctor ordered for team Jolly Gymkhana. They are looking to take the fight to the enemy camp. Ladies and gentlemen, boys and girls, the scoreline at the end of 18 overs, 134 for 4. This is a very fruitful partnership. 12 balls, I am sure that they are eyeing for at least 24-25 odd runs. Definitely now Aditya is not going to be bowling further in this match after that expensive over. The need of the hour, slow bowlers to be put into action. It's going to be Aditya Singh to be bowling from the far end. Should be his last over. It will be a bit of a challenge to now tie down both these batters. They are in a killer mood now. Aditya to Shubham. Here we go. Showtime. Oh, yes. You miss, I hit. That wicket could cost Jolly Gymkhana 7 to 8 runs in the end. And those kind of 7 to 8 runs could be crucial. You never know, the new man could come and put the ball out of the ground 2 to 3 times. The world salute the new man to replace Shubham. A good enterprising knock from Shubham. He does the job for the team. A very good knock. Fine knock from a fine young man. Aditya picks up a wicket with the very first delivery in the penultimate over. Over number 19, getting off to a good note for NSCI. The National Sports Club of India, a historical club, the NSCI. They've got a great legacy, a sports legacy. They're based in Worli, and the Jolly Gymkhana is based in Ghatkopar. Both the clubs love their cricket. .134 for 5, 11 balls left in this innings of Jolly Gymkhana. Oh, that's a good connection. A couple of bounces to the man in that mid-off area. In this situation now, Sujay has to take the lion's share of the strike. At least 85 to 90% of the deliveries that have been left need to be taken care of by Sujay. Well bowled and well hit as well. We'll have to wait and watch. He's such a strong man. He's as strong as a bull. What a rearguard action by Sujay.
That is indeed quite an enterprising onslaught. The way he has built his innings, that has been absolutely a sight to watch. 141. That 150 definitely is going to be a reality. Can they get to 155? Now they should be greedier for a few extra runs. Maybe 160 is what they are looking at. Well bowled and well played. He's got an answer to everything that you dish out. A bit of a fumble in the deep will cost the team one extra run, not just one extra run. The strike back with the attacking batsman Sujay. 143. 2 balls left in the penultimate over. Over number 19. Oh, what a good connection. He's got an answer to everything that you dish out. हर किस्म की बंदिश को तोड़कर हर तरह की रणनीति को नेस्तनाबूद करते हुए करारा जवाब दिया है सुजय ने इन आखिरी लम्हों में तेज तर्रार बल्लेबाजी को दर्शाते हुए. No answers. They have been caught by surprise with this rear guard onslaught. They have been caught by surprise, just like a rabbit in front of searchlights. That's the end of an enterprising knock. Indeed, well played. He will come back to a standing ovation. Yash was never going to be making a mistake. That was a dolly catch. 149. In comes Akash. 149 it is. Can they make it to 160? Akash shit. What a valuable knock of 43 odd runs. What a great value addition to this team. That is Sujay for the Jolly Gymkhana. A jolly good innings from a jolly good man, a jolly good batsman. That is Sujay. Or they're looking for the second. In the end, they decide against it. The bowler in charge of the last over is Jairaj. $150 on the board. What a fighting total. Whatever they collect from here on is going to be a big bonus. It's got an odd action and off the thickish top edge. Maybe the second one on the cards. If he didn't have to connect it, surely was going to be a wide one. They have taken a big gamble by giving the ball to Jairaj. Guess they are left with no options with that expensive over from Dani. 152. 4 balls left. It's not a regular bowler. 153 with that single. 3 balls left.
It's Shevel Shet, the bowler, and not Jairaj. Beg your pardon. .154 with that leg by. 2 balls to go. In the final over, 2 balls. Can they finish this innings with a flourish? And that's the only thought process. Maybe 2 sixes or 2 boundaries or a boundary and a 6. They got to find the fence. Maybe 2 out of 2 times or at least 1 out of 2 times. Surely a wide one. He'll have to re-bowl that delivery. 1 extra run. Takes the score to 154. 155 is it? 155. 2 to go. Shevel. Not a bad job so far. 1 ball left. 156. 156 it is. The final ball coming up. Winning the toss and opting to bat first. They were in the doldrums. But that's been a fantastic rearguard action to reach where they have. 156. They need a boundary. No doubt about it. Double on strike. It's not going to be a boundary. They've taken 2 runs. 159 runs to win the match. The set target for NSCI, 159 of 120 balls. At one point in time, looked as if they would struggle to get to 135. In the end, they put up 158 awesome runs. So the set target for the ravishing batting lineup of team NSCI, it's going to be 159. Thank you, ladies and gentlemen, boys and girls. मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के उस पार.
Playtime. The run chase getting underway. The skipper for NSCI, Karan Chug, off the mark with that single. To give him company, that is the trusted lieutenant of the team, Kamran. Over the last so many seasons, over the last quite a few years, this prolific batting pair has been amongst so many valuable runs. Karan Chug has been the architect of so many famous wins for Team NSCI. Once again, he's got to be in his elements, Karan and Kamran. The new ball in the hands of Hardik Shah. Oh, such a good delivery, and yes, the finger goes up. What a delivery there. What a start here by Hardik. On his way back to the pavilion, Kamran is looking distraught, but he's got to take that walk. Ankit Baleria, the ace wicketkeeper batsman for NSCI, now arriving at the wicket to replace Kamran. One for one. Oh, that's a bad delivery. 5 wide runs. There was no way that the wicketkeeper could have stopped that one. Bit of a shocker, that delivery to a new batsman. After having picked up a wicket, he should have been bowling with his tail up with a relative sense of confidence. Absolutely a bad delivery. Oh, what a good delivery. What a good delivery. A sense of interest there in that appeal. He's making this new ball talk. नई गेंद के साथ शरारत कराने में कामयाबी मिलती हुई हार्दिक शाह को, बहुत ही दिलचस्प पहले ओवर को अंजाम देते हुए. He's putting the batsman in a spot, there is no doubt about it. He's opening up the batters. So he's getting some good late movement there, good seam presentation, that's the key. Oh, this could be the second wicket down. We'll have to wait and watch. Fortunately for Team NSCI, the ball falling in no man's land. Hardik is creating chances here. He's creating those opportunities. Closing the face of the bat a little too early off the thickish outside edge. The ball falling behind the man in that first slip position. What a way to get started. What a way to start their defense. Team Jolly Gymkhana.
A shoddy work by the wicketkeeper, and that is bad bowling by Hardik. It's in the midst of such an exciting over. The pressure is on the batters. Those kind of extra runs will release the pressure. So 3 runs added to take the score to 7. 7 for 1, 2 balls left. In over number 1, it's 10. 10 for 1. Oh, what a delivery. What a good one. It's getting some good purchase of the wicket. For the first time, any seam bowler is looking dangerous in this match. It's a flat wicket out there, but somehow he's getting some good purchase there. Quite an interesting first over. Quite an intriguing first over from Hardik. He's making the new ball talk. What a great usage of the new ball in the first over. There you go. He goes fishing outside the off. Some a little tentative Ankit Baleria. End of a rollicking first over. The scoreline reads 11 for 1. Everything happening in that first over. 1 wicket, a couple of chances, a couple of times he got the batsman into a spot, a couple of bad deliveries, quite a few extras. Quite an eventful first over, isn't it? It's going to be Manav to be bowling from the Combox end. Malo Parikh now into the attack from the Combox end with his left armers. The left arm seamers over the wicket. Oh, what a shot. What a shot from the prolific run getter for the NSCI, Karan Chugh. Good evening and a warm welcome, says Karan Chugh to Malav. Welcome to this run chase in the second semi-final of the Mumbai Club Cricket Championship 2025-26, presented by M3C Foundation, not-for-profit initiative, led by Vinit Dujodwala, Mohit Chaturvedi and Ganesh Rai. This is one of the most premier Mumbai's club championship. It's got a wide range of shots. No room for error when you're bowling to Karan. छोटी सी गलती और आपको एक चौके या छक्के के साथ खामियाजा भुगतना होता है. ये उनका नेचुरल गेम है. If he gets going, this match could end before its stipulated time. On the other hand, if they get the wicket of Karan, it's going to be quite an interesting run chase. The match on, the game on. The swords are out. तलवारें खींची गई है. दिलचस्प नज़ारा पेश होता हुआ इस सेकेंड सेमीफाइनल मैच में. मालो बनाम करण. बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी अच्छी लाइन थी. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया. बाहरी किनारा लेकर गेंद फ्लाई कर गई. थर्ड मैन एरिया में 1 रन का इजाफा. Malo will be more than pleased to be bowling to Ankit Baleria. 22 for 1. We are into over number 2. The first 9 balls in this run chase have gone for 22 runs. Steering the ball into that backward of point area.
ये बहुत ही बड़ा विकेट है. Looking to play a shot that really wasn't there, looking to manufacture a shot. In the bargain, he loses his cool, not just his cool, he loses his wicket. Now that is the big fish in the net. Exactly what the doctor ordered for team Jolly Gymkhana. That's a jolly big wicket. A calm run gone for naught. His opening partner, Karan Chogu, was looking in a killer mood back in the pavilion. He will be absolutely unhappy. इस ओवर में काफ़ी रन्स आ चुके थे, उसके बावजूद स्टेप आउट होकर और एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप मालव को वो पहला विकेट मिला और वो बड़ी मछली जाल में फंसी. The new man in, Shaival Shit. जिस विकेट की खोज में थी टीम जॉली जिमखाना, जिस विकेट की तलाश में थी जॉली जिमखाना, वो विकेट उनके पक्ष में प्राप्त होता हुआ ये बड़ी राहत की सांस ली होगी जॉली जिमखाना ने करण के उस विकेट के चलते. नए बल्लेबाज शेवल शेठ अच्छे इंटेंट के साथ अपने खाते को खोला है. शेवल ने उस विकेट के चलते एक नव चेतना जागरूक होगी टीम जॉली जिमखाना के खेमे में. एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा. Some sanity will be restored back in the match, courtesy that wicket of Karan. बहुत ही मजबूत प्लेयर पेविलियन में वापस जा चुका है. The bold and the beautiful back in the pavilion, Karan Chug and Kamran. बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से करण और कामरन की अनुपस्थिति में ये टीम इस इनिंग्स को पहले तो संवारती और फिर किस तरह से सजाती है उस लक्ष्य को मुकम्मल करने के लिए. अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा टीम एनएससीआई के बैटिंग लाइनअप में. इट्स अ स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप. हार्दिक विल कंटिन्यू. The match is in a state of equilibrium, maybe, or maybe just a little extra weightage in favor of team Jolly Gymkhana. The two ravishing openers back in the hut. The reinforcements in the form of Shaival Sheth and Ankit Baleria. Left and right hand combination. Oh, what a delivery. That's a ripper. That's a japper. Just look at where the wicketkeeper collects that delivery. So he's getting some good purchase of the wicket. Good seam presentation. हार्दिक शाह की पूरी गेंदबाजी उनकी सीम प्रेजेंटेशन पर निर्भर है. सीम प्रेजेंटेशन को किस तरह से पेश करते, इसके इर्द गिर्द हार्दिक की गेंदबाजी निर्भर होती है. ये वाली गेंद अलग दिशा में गई. अपने वेरिएशंस का मुजाहरा पेश करते हुए हार्दिक काफी अच्छी रिदम में नजर आते हुए. प्रेशर इस वक्त हल्का सा एनएससीआई के बल्लेबाजों पर नजर आता हुआ. They got to weather the storm. It's time for a partnership to come alive. What a good shot. The reinforcements have come into play in the form of Ankit and
Shaival. The Mool mantra for both these batters: stay at the wicket for at least 5 to 6 overs without being separated. Play some orthodox cricket, put the bad balls away, give respect to the good deliveries, and keep rotating the strike. That should really be the match template here. Both the batters are quite experienced. You got to stick to the process, isn't it? Oh, could not find the gap. That was a bad delivery. It was begging to be put away. Unfortunately for the batting team, nothing added. 25 for 2. No worries as far as the run rate is concerned. You got to take care of the wickets column. That's paramount. That is where you win the plot or you lose the plot. Oh my word, he was a goner for all my money. That required a direct hit. Maybe he had only one stump to aim at. Difficult to tell from this position where we are sitting in the com box. Score after 3 overs, 26 for 2. 8 extras in those 26 runs. The plot is thickening. Do not go away. Two very strong and assertive teams up against each other. Absolutely no animosity between the two teams. But yes, both the teams putting in their best efforts to make a match out of this one. This is the semi-final, second semi-final. At the moment, team Jolly Gymkhana is bustling with renewed vigor and energy. Channel bowling, or rather the metronomic kind of bowling, has to be put on display by Parik. He's picked up that first wicket in the first over, and that too is picked up that important wicket of Karan. That will do his confidence a world of good. Where does he put the ball? Consistently, you got to be putting the ball into that business area, in that corridor of uncertainty. At the moment, this is the modern day cricketer in the form of Parekh versus the old school cricketer in the form of Ankit. What a big canvas to be filling with your cricketing colors. The second semi-final of the MCC Championship, the Open Age Tournament. Big canvas to be filled. The Mahalakshmi Sports Ground, the Western Railway Cricket Ground, looking like an amphitheater at the moment. And the players out there looking like artists. A man in hot chase, he cannot get around it. 4 valuable runs added. Room on offer. One small mistake and just look at the penalty that is had to pay. He pays a penalty of 4 runs. It is absolutely prudent for the batting lineup of Team NSCI to get a little ahead of the situation. You do not want to be lagging behind in this kind of a situation. Offering the full face of the bat. And the moment it went past Anand Thakkar, it was always going to be a boundary. That low full toss nicely put away.
two mistakes in this over and two boundaries there. When you're bowling with that kind of a pace, you cannot be bowling in those areas. You got to put the ball in the right area. Precious runs being collected by Team NSCI. Road to the core and open the glory door. That should be the mantra for both the teams. At this moment, difficult to pick your favorite team. Almost in a state of equilibrium. What a good leave, that one. You got to have more of absolutes than maybes. At the moment, both the teams have equal number of absolutes and equal number of maybes, and that is why the match is evenly poised. The momentum, maybe you could say, a bit in favor of the fielding team, the bowling team, that is Jolly Gymkhana, because they have picked up Kamran and Karan quite early on. What a good shot. What a good shot. Enough elevation on it to put the ball above the head of the man in that mid-wicket area, the wideish mid-wicket area. Quite an expensive over. Exactly the kind of over Team NSCI wanted to break the shackles and get into the driver's seat. .38 for 2, 3.5 overs. Yes, you got to stick to the process. You got to be a picture of grit and determination. The hardest things are the things that are most worth doing. And the thing that both these batters need to do out here is to stay at the wicket and also accumulate the runs in quick time. That's a hard thing to do, but eventually it could be the right thing to be accomplishing. For either teams, the situation has not spinned out of control, not spiraled out of control. This match could go either ways. Bhavin Cheda now being brought into the attack from the far end. You got to be relentless in your pursuit of goals. You got to be ruthless. इतनी शिद्दत से इस मैच को जीतना चाहो कि पूरी कायनात जुट जाए आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में. ये रवैया होना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए आपका. आपके तेवर भी उसी तरह के होने चाहिए. चाह और राह दोनों का ही होना जरूरी है इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए. Steely nerves is what Team NSCI want, or also the Jolly Gymkhana. The team that exhibits titanium nerves could end up on the winning note. What a good shot. The stocks on the rise for Ankit Baleria. Maybe in this run chase, Ankit Baleria could be the pilot light to guide the team to glory. The key thing for both the teams, stay alive in all situations, in all conditions. You look to stay in contention, look to stay alive.
This is one of his pet shots. Growing in confidence, that is Ankit, is on to 21 of 15 balls. Initially, when he arrived at the crease, was a bit of a struggle, but he's found his rhythm. He seems to be in good touch. Now he's got to convert this workman-like start into a big knock, maybe a match-winning effort. In the absence of Kamran and Karan, maybe Ankit will have to take that extra responsibility on his shoulders. He too is a champion player, one of the key elements in the batting lineup of team NSCI, that is Ankit Baleria. Bhavin Cheda. It's a good battle out there, a good contest between bat and ball. The match could end up to be an absolute cinema. The TRPs for this match hitting out of the roof, and that's a soft dismissal. Bhavin Cheda picks up a wicket in his very first over. Soft dismissal. गलत शॉट खेल गए, या तो नीचे से खेलना था या तो फिर 100% एफर्ट लगाकर एरियल रूट लेना था. हाफ हार्टेड मेजर्स और अपने विकेट को खोया है. उस कैच को मुकम्मल किया धवल ने. अंकित जवेरी अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं. चट्टान जैसा अनुभव है अंकित के पास. संयमी प्लेयर है, सूझबूझ के साथ अपने क्रिकेट को खेलते हैं. डिपेंडेबल प्लेयर है, रिलायबल प्लेयर है अंकित. टीम एनएससीआई की एक अहम कड़ी के रूप में ख्याति प्राप्त की है अंकित ने. With that wicket of Shaival, there will be some sort of a positive undercurrent in the camp of Team Jolly Gymkhana. A lot will depend on Ankit Baleria. Is the set batsman, and it's his job to now take the team to the podium. To give him company, that is Ankit Javeri. The aging brain is far more superior in emotional intelligence than its younger counterpart. Quite a few young players in the lineup of both the teams, and quite a few experienced players as well. Oh yes, you got to be very decisive with your footwork, especially to a spin bowler. Not much turn in the wicket. They're bowling wicket to wicket. You got to keep your bat a little ahead of your pad and not adjacent to the pad when you're playing a spinner. That is where you got to be cautious. That is where you got to be careful. Score after 5, 44 for 3. Under the radar tonight, it's going to be Ankit Baleria and Zaveri. The good balls have to be maneuvered into the gaps. The singles need to be taken consistently. Mayur comes into the attack from the combox end. Now that's a big responsibility on his shoulders. But such a good situation for any new bowler to come in and bowl his spell. Ideal conditions, tailor-made conditions for a new bowler. Is one of the regular bowlers, is one of the key links, and this situation maybe is exactly the kind of situation that he wanted. Strong in character is what Ankit Baleria is looking at the moment. Test of character for team NSCI's batting lineup. They've lost 3 wickets.
Oh, the finger goes up. Ankit Baleria, they pick up the fourth wicket. The set batsman is on his way back to the pavilion. He went fishing outside the off stump. A bit of a tentative push and he loses his wicket there. The introduction of Mayer into the bowling attack has turned out to be a master stroke as he manages to send the fighter player Ankit, the well-set batsman, back to the pavilion. Now this could really turn the tide in favor of Jolly Gymkhana to a certain extent. Lots of cricket left, but yes, this is exactly what they wanted, and they get into the zone with that fourth wicket. The top order in shambles for Team NSCI. That valiant fighting knock comes to an end. The head was a bit in the air when he played that shot, not so well balanced, and that is where he lost the plot and the wicket as well. The momentum in the camp of Team Jolly Gymkhana. The new man in Jairaj Thakkar. With that key wicket, maybe Team Jolly Gymkhana have broken the back of the chase. They have taken the wind out of the sail. They still have enough firepower in their batting lineup to get to the podium. Team NSCI, there's no doubt about it. We are headed for a close finish. At the moment, having lost 4 wickets, Team NSCI will have to do some firefighting here. The disbelief and the self-doubt, the two factors have to be thrown out of the window. The off-cutter, the slower one, straight to the man inside the circle. You got to hold on to that element of self-belief. The disbelief and the self-doubt has to go out of the equation. Putting the ball into the ground. Just look at the body language of Team Jolly Gymkhana. They seem to be all charged up, all pumped up. And why not? As I mentioned earlier, Ankit Zaviria and Jairaj Thakkar, they need to do some firefighting here. They need to build a partnership. They need to resurrect this innings with a good enough partnership. They got to show steely nerves. They got to show some very good character. अग्नि परीक्षा से गुजरती हुई टीम NSCI का मिडल ऑर्डर. Success is rooted in being talented, strong in character, and sticking to the process. Sticking to the process that has been trending over the last 3 to 4 years in international cricket, and that line has boiled down to the club level as well. Sticking to the process. Just focus on the controllables. Do not worry about the uncontrollables. A tentative shot. He goes fishing outside the off stump. End of over number 6. 48 it is. A healthy run rate of 8 and over. The 4 wickets that they have lost, that's going to be a bit of a concern. As I mentioned earlier, you got to hold on to that element of self-belief as
You cannot bat through a fog of disbelief and self-doubt. अगर आपके जहन में इस तरह की स्थिति में किसी भी वक्त अगर कोई शंका उत्पन्न होती है, तो फिर आप इस मैच को जीतने से रहे। अपनी काबिलियत में विश्वास रखो। वेट फॉर दैट पॉजिटिव शिफ्ट टू कम अराउंड। T20 गेम में बहुत ही चंद गेंदों में मैच अजीब करवट लेता है। भाविन का स्पेल जारी रहता हुआ स्ट्राइक पर अंकित। अच्छी गेंद आमंत्रित किया था अंकित को कि बड़ा शॉट खेले। जब बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट खेलता है तब मौका भी दे जाता है गेंदबाज को कि उसका विकेट उठाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए जिस तरह की स्थिति में है यहाँ पर टीम जॉली जिमखाना, थोड़े से खतरों को मोल ले सकती है। They have the cushion of 157 runs to be defended, and having picked up 4 wickets, they are in the driver's seat at the moment. The pressure is on the middle order of NSCI. Once again, well bowled, putting the ball in a workman-like fashion into that whitish mid-wicket area for a single. 50 runs up on the board for team NSCI. 50 up. Standing tall on that one, but not able to find his spot. दाद देनी होगी जॉली जिमखाना के बॉलिंग ब्रिगेड को कि काफी अनुशासन से अपनी भूमिका को अदा करते हुए one of these two batters will have to be the mover and shaker of the team. Testing times. But this is exactly what happens in a big match on the big stage when you have two equally balanced teams up against each other. The two semi-finalist teams, obviously, they have got the capability to be the champion team, either of the two teams. So this is exactly what you have to be ready for. A fighting cricket from your opponents. It's not going to be easy here in the semi-final match. You're not going to be offered an inch, as you are not going to be giving an inch. At the moment, both these batters weathering the storm. 7 ओवर्स के पश्चात रन संख्या 51 रन 4 विकेट्स के नुकसान पर। At the moment, team Jolly Gymkhana are calling the shots. On the other hand, team NSCI is weathering the storm. They are coolly and calmly going about their business. Both these experienced batters know that they have to stay put at the wicket for some overs. 10 overs के पश्चात सोचेंगे कि किस तरह से वो टारगेट को मुकम्मल किया जाए। बहरहाल इस वक्त जरूरी है कि दोनों ही बल्लेबाज बिना बिछड़े विकेट पे डटे रहे। शुभम को अब गेंदबाजी में उतारा है। आजमाइश होती हुई शुभम की गेंदबाजी ब्रिगेड के अगले नुमाइंदे के रूप में गेंदबाजी करेंगे। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से स्ट्राइक पर है अंकित जवेरी। वेलकम टू द cricket fans watching this match on YouTube. For those who have tuned in late,
158 runs to win this match. At the moment, 51 for 4. 159 to win it is. Some extra pressure on the batting lineup of Team NSCI. Shubham Vaidya, who played such a good hand with the bat. Now it's time for him to come out and deliver the goods with the ball. One of the key all-rounders for the team. A good-looking shot. A man looking to get around it. He cannot stop it. A much required boundary to the tally of NSCI to take the score on to 56. You got to illustrate your potential in the form of performances. The bowlers in the first semi-final and till this time in the second semi-final as well, they have had the upper hand. So this is not exactly a batting paradise. There is something in the bowlers as well. If you're willing to bend your back, if you're ready to stick to the process, there is something in it for the bowlers as well. A 56 for 4. I'm sure that in this semi-final match, both the teams have lined up all their ducks to negotiate any kind of a situation. Team NSCI have enough ammunition in their batting armory to still make a match out of this one. The only thing is they got to fire the ammunition at the right time. At the moment, they are weathering the storm. They're going by the book at the moment, making sure that they do not lose any further wicket. Too short in length, too short to be putting the batsman in any kind of trouble. 57 for 4 it is. One ball left in over number 8. 73 balls and 102 to win. Oh, that was the variation delivery. 102 required in 72 balls. Till the time the required run rate does not go up to 9.5, 10 and over, nothing to worry for the batting team. They got to make sure that they have got enough wickets in hand when they go for that onslaught. When they go for that rear guard action, you got to have enough number of wickets in your camp. 6 विकेट्स अभी भी महफूज है. बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मैच खेला है जॉली जिमखाना ने. एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था 135 के अंदर जॉली जिमखाना की पारी समेट जाएगी. 158 रन्स बनाए और वापसी की. इस वक्त गेंदबाजी करते हुए भी 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पेविलियन वापस भेजा है टीम जॉली जिमखाना ने. आनंद भाई भाविन का स्पेल जारी है. Oh, what a good delivery. Slow to the air, well tossed up into the stumps. He does well to put that bat ahead of the pad. You do not want that bat to be adjacent of the pad, especially when a bowler is bowling wicket to wicket, especially to a spinner. You do not want that ball to be hitting your pad first.
The ball ricocheting off the bowler. They collect a single. That single takes the score to 60. 60 for 4. Yes, you got to say that team Jolly Gymkhana have a certain superintendence in this match. Just a little bit of superintendence. 2 अच्छे ओवर्स के चलते NSCI फिर से एक बार डंके की चोट पर इस मैच में वापसी रच सकती है और उस पॉजिटिव शिफ्ट की तलाश में है, उस पॉजिटिव शिफ्ट की इंतजार में है टीम NSCI। जैसे ही मैंने ये कहा और एक विकेट का पतन होता हुआ, शुभम ने उस कैच को अंजाम दिया। आधी टीम पेविलियन में वापस आ चुकी है। हाफ हार्टेड शॉट, वो हाफ हार्टेड शॉट प्रेशर सिचुएशन की वजह से था। ऑन एनी अदर डे, in any other kind of a match situation, he would have put that ball into that extra cover fence over the head of the man in that cover position inside the circle. That's a key wicket. Aditya Singh arrives at the wicket. क्रीज से दामन छूटा है जवेरी का और क्रीज पर आगमन होता हुआ आदित्य सिंह का। It's going to be Mayur Gori to be bowling from the com box and half the team back in the pavilion. It's going to be a test of character. There's no doubt about it. But yes, they have got enough ammunition left in the batting lineup. This man, Aditya Singh, is a fantastic player, an absolute professional bat. A genuine match winner with the bat, that kind of a capable player. The only thing here is to stay at the wicket, to take the match deep, to take these runches deep. Well bowled. Into the ribcage of the batsman, looking to cramp him for room. The back of length delivery. Is bowling up front to the batsman. Is mixing up the deliveries very subtly. So good subtle variations from Mayur. Is bowling a very business line in length. Is keeping the batters under control. इस वक्त इस मैच में काफी नियंत्रण प्राप्त कर चुकी है टीम जॉली जिमखाना। काफी पक्ष मजबूत है। दूसरी तरफ तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर इस मैच में बने रहना होगा टीम NSCI ने। अच्छी गेंद, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी। थोड़ा सा ड्रामा, कोई नुकसान नहीं। 61 पे 5, 10वां ओवर प्रगति पथ पर है। 3 गेंद शेष है। 3 गेंदों के बाद वो ड्रिंक्स इंटरवल लिया जाएगा। रिक्वायर्ड 109.33 हो चुका है। 10 साढ़े 10 तक कोई दिक्कतें नहीं है। कोशिश यही करनी होगी कि वो 9.5 के ऊपर रिक्वायर्ड 100 न जाए। आसान नहीं होगा,
Easier said than done. This man really holds the key. Aditya Singh, left and right hand combination. चुनौती भरा होगा जॉली जिमखाना के गेंदबाजों के लिए और फील्डर्स के लिए भी. ओ गेंद हल्की सी नीचे रही. 4 रन्स मिले. चले स्वागत आ रही है 4 रन्स. Aditya Singh off the mark with the boundary. 65 for 5. Moir has so far bowled 10 deliveries. He's given him 9 runs. He's picked up a wicket as well. Good channel bowling, the right line, outside the off stump, keeping the ball in the business area. Metronomic bowling. It's bowling as if he's a man on a mission. Aditya Singh and Jairaj Thakkar, two proficient batters for team NSCI. The change in pace, अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करना चाहता आदित्य सिंह को, लेकिन दिशा से भटके, लाइन से भटके, जिसके फलस्वरूप चौके के साथ अपने इस ओवर को खत्म करते हुए 10 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन से 5 विकेट के नुकसान पर टाइम फॉर द ड्रिंक्स ट्रॉली टू गो इनसाइड.
Welcome back to the final segment in this second semi-final match. 10 overs left. Shubham being brought into the attack from the far end, switching ends for him. The second semi-final match of the MCC Championship 2025-26. Well bowled. आखिरी वक्त पर अपने शॉट को चेक किया, मन बनाया था बड़े शॉट को खेलने का। जयराज ठक्कर ने आखिरी वक्त पर मन बदला, नजाकत से खेला, गेंद को केवल दिशा दी। स्ट्राइक वापस आदित्य सिंह के पास। 89 रन्स बनाने हैं 57 गेंदों में। 89 to win of 57 balls with 5 wickets left in the kitty. Oh, what a brilliant effort there. A 9 on 10 for that effort. That goes in vain. That's a boundary to the credit of Aditya Singh and NSCI. 74. They got to level up the situation here. That is team NSCI having a upper hand to a certain extent here in this match situation is the Jolly Gymkhana. 76 for 5 at the end of 11 overs. They need to push the envelope further. Somebody needs to be the gun finisher for Team NSCI, and in all probability, if you look at the potential, if you look at the stocks, definitely it has got to be Aditya Singh to be the gun finisher. Jairaj Thakkar, the man on strike. Shubham Vaidya into the attack from the combox end. As a professional player, you got to prepare your body and mind for quality outcomes. Jairaj Thakkar is playing a workman-like innings. Is making sure that he holds a foot at one end. Is looking to give most of the strike to Aditya Singh. 77 for 5 it is. The Mumbai Club Cricket Championship 2025-26 presented by M3C Foundation, not-for-profit initiative.
Vinit Dujodwala, Mohit Chaturvedi, and Ganesh Roy, the three trustees of the foundation. Oh, what a delivery! Profound turn. Bit of a surprise for Aditya. चलिए 6 रन्स मिलेंगे. वो गेंद आगे की तरफ परोसी और उठा पटक दिया मैदान के बाहर. जरूरी है कि आदित्य सिंह का बल्ला रनों से न रूठे इस तरह की मैच सिचुएशन में. आदित्य सिंह एक ऐसे प्लेयर है जो तेज तर्रार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को अभी भी पोडियम तक ले जाने में कामयाब हो सकते हैं. जरूरी है कि बल्ला रनों से न रूठे. गति में परिवर्तन किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लाइट दिया, स्लोर टू द एयर खेल दिया. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन की प्राप्ति होती हुई. रन संख्या 84 रन. 5 विकेट के नुकसान पर 51 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 76 रन बनाने हैं. रिक्वायर्ड रन रेट है 9 का 9.00. 50 में 75 बनाने हैं. चुनौती भरी स्थिति है लेकिन नामुमकिन नहीं है. अच्छी गेंद, टर्निंग स्क्वायर, ओपनिंग द बैट्समैन अप. What a workmanlike innings from Jayraj Thakkar. He's going by the book. This is exactly how he's programmed as a professional player. एक खास इनिंग्स खेलनी होगी आदित्य ने. खास प्लेयर्स वहां से सांस लेना शुरू करते हैं जहां पर कुछ प्लेयर्स दम तोड़ते हैं. वैसा ही एक मैच विनिंग प्लेयर है आदित्य. आज बिल्कुल रंगत में आकर उजागर होकर अपना सर्वोत्तम क्रिकेट खेलना होगा. ओवर की समाप्ति. 12 के बाद 86 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर. जितना बड़ा मंच उतना और निखर कर आता है एक चैंपियन प्लेयर. दिस इज एग्जैक्टली द स्टेज and the platform wherein the key players have to come out and be in their elements. The top order is back in the pavilion. It's all up to Jayraj and Aditya Singh to bail the team out of trouble. On the other hand, Team Jolly Gymkhana have to stick to their game plan. They have to stick to the process. Pranab Aurangabadwala into the attack. What a valiant innings he played as the opening batsman, and now he's got to produce some magic here with the ball. Pranab versus Aditya should be a good battle. चौके के साथ स्वागत किया है प्रणब का. अभी तक इस मैच में जीत के हस्ताक्षर नहीं लगे हैं. थोड़ी सी स्थिति अच्छी है टीम जॉली जिमखाना के लिए, लेकिन एनएससीआई दम तोड़ने वाले में से नहीं है. घुटने नहीं टेकेगी टीम एनएससीआई. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की उस चौके के बाद. जीत और जुनून की ज्योत को जलाए रखना होगा आदित्य सिंह और जयराज ने. उम्मीद पे दुनिया कायम है. मैच में लगे रहना है, डटे रहना है
उस पॉजिटिव शिफ्ट की तलाश में रहना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी उस पॉजिटिव शिफ्ट की। T20 गेम चंद गेंदों में रुख बदल सकता है, मैच अजीब करवट ले सकती है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही सही रफ्तार से अपने गेंदों को अंजाम देते हुए। बस इस तरह की स्थिति में जरूरी है कि गेंद को ठीक एरिया में लैंड कराए। Playing it into that backward of point area, deepish point, the sweep point. That single takes the score to 92. 44 balls and 67 runs to win the match. The required run rate 9.14. अचीवेबल है ये टारगेट और डिफेंडेबल भी है। देखना है कि क्या होता है। आनंद ठक्कर थोड़े से टेंशन में है। बढ़िया गेंद, उस गेंद को भाप नहीं पाए विकेट कीपर, जिसके चलते चौका मिला 22 के रूप में। कितनी बढ़िया गेंद, बल्लेबाज तो बीट हुए, चारों खाने चित हुए, विकेट कीपर भी उस गेंद को नहीं कलेक्ट कर पाए, फलस्वरूप वो चौका मिला। 96 पे 5, 96 for 5 it is. What a good rear guard action by Aditya Singh and Jayraj Thakkar. The focus is on Aditya. He's under the radar. What a good shot. What a smart shot. Drifting down the leg side. All that he had to do was get some bat onto it and just give it that required elevation. 100 runs up on the board for Team NSCI at the end of 13 overs. संघर्षों के मैदान में अभी भी इस रन चेस को जीवित रखा है आदित्य और जयराज ने। क्या खूब साथ निभाया है जयराज ने। आदित्य के कंधों पर यह दारोमदार है कि वो बड़े रन्स को स्कोर करे। दूसरी तरफ जयराज ठक्कर को स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा, सूझबूझ के साथ साथ निभाना होगा आदित्य सिंह का। जिस लिहाज में इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे जयराज, उसी तरह से आगे इस इनिंग्स को संवारना होगा। सजाने का काम करेंगे आदित्य, संवारने का काम करना होगा जयराज ने। ये आलम है, ये स्थिति है। गेंदबाजी में अब शुभम, 42 गेंदों पे 59 रन्स बनाने हैं। चलिए, अच्छी गेंद के साथ अपने इस ओवर को शुरू करते हुए टीम जॉली जिमखाना भी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच आज थमा हुआ है। This could go either ways. पटकी हुई गेंद, दूसरे रन के लिए निकले हैं लेकिन वापस भेजा अपने घर। आदित्य ने किसी भी तरह से इस वक्त कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते हुए, और सही सोच है, वाजिब सोच है। 102 पे 5, एक अच्छी साझेदार इस वक्त मार्ग प्रशस्त है। You do not need any obstacles, especially in the form of a run out. That should be the last thing on your mind. Too short to be putting the batsman in any sort of trouble. 102 for 5. The score remains stationary on 102.
The GSC are the defending champions. On the other hand, NSC are the runners-up. इस चैंपियनशिप ट्रॉफी पर दोनों ही टीम्स ने नजर बनाई हुई है। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। बस ये वाली स्थिति है दोनों ही टीम्स के लिए। एनएससीआई ने गई एडिशन में रनर्स अप टीम बनी थी। They would like to go one level up and be the champion team. On the other hand, even team Jolly Gymkhana would like to lay their hands on the championship trophy. विकेट्स को देखे तो थोड़ा सा पक्ष मजबूत नजर आता हुआ टीम जॉली जिमखाना का। अगर इक्वेशन को देखे तो पलटा थोड़ा सा समांतर नजर आता हुआ एनएससीआई और जॉली जिमखाना का। 36 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 56 रन बनाने हैं। आजमाइश होती हुई हार्दिक की अब फार एंड की तरफ से। हार्दिक ने जिन नई गेंद के साथ गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजों को तकलीफ में डाला था, बल्लेबाजों को प्रश्न चिन्ह पूछे थे अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ, अपनी सीम प्रेजेंटेशन के साथ। देखना है कि जब अब उनकी वापसी हुई है दूसरे स्पेल में किस तरह से नियंत्रण में रखते हैं। बारी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में, केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त करना होगा। पहला रन बड़ी धीमी रफ्तार से लिया था जिसके चलते वो दूसरा रन लेना संभव नहीं, उस फंबल के बावजूद। अब सावन तो छोड़ धूप में भी बरसात होगी, अब सावन तो छोड़ धूप में भी बरसात होगी, जब तू खुद को पहचानेगा तेरी खुद से मुलाकात होगी। वो वाला क्रिकेट का दृश्य पेश करते हुए आदित्य और विशेष रूप में जयराज ठक्कर एंटरप्राइजिंग तरीके से इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करते हुए आदित्य और वर्कमैन लाइक तरीके से इनिंग्स को संवारते हुए जयराज ठक्कर। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अपने आप में विश्वास रखना होगा क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत अपने आप पर जीत प्राप्त करना, यह सबसे बड़ी जीत है। खुद पे विजय हासिल करना इस दुनिया में सबसे बड़ा विजय है। बहुत ही बड़ा शॉट है, मॉन्स्टर हिट। जस्ट लुक एट द वे ही गॉट स्टक इनटू दैट वन। This is Aditya Singh at his ravishing best. He's got an electric range of shots. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि खुद की बल्लेबाजी के बलबूते पे इस मैच का तख्ता पलटने की काबिलियत है आदित्य में। देखिए किस तरह से इस इनिंग्स को बिल्ड किया है, मोमेंटम प्राप्त किया है। शॉट सिलेक्शन अभी तक बहुत ही पुख्ता नजर आया है आदित्य का। टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, अभी तक स्टीली नर्व्स के साथ खेला है आदित्य ने और क्या खूब साथ निभाया है जयराज ने। अच्छा क्रिकेट, ये अच्छा क्रिकेट है, सूझबूझ वाला क्रिकेट है। मन बनाया है कि अपनी टीम की नैया पार लगाऊंगा। जब वो विनिंग रन जब तक नहीं बनता है शांत नहीं बैठेंगे आदित्य और पेविलियन में भी वापस से नहीं जाएंगे, ऐसा मन बनाया है। दूसरी तरफ इस साझेदारी को तोड़ने की फिराक में टीम एनएससीआई गत 15 मिनटों में एक वापसी रची है टीम एनएससीआई ने। मैच समांतर स्थिति में है, बिल्कुल समांतर स्थिति में। अब अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो
वहीं से रिटर्न आना होता है जयराज ठक्कर को। बाल बाल बच्चे जब इतना आगे निकल गए थे आदित्य, तो फिर अपने आप को रोकना नहीं बनता था, चाहे फिर जयराज का विकेट ही क्यों ना जाए, बलिदान करना पड़ता आदित्य के लिए। लेकिन बाल बाल बच्चे 112 पे 5। आलम अब यह है कि 32 गेंदों में 47 रन बनाने कोई ज्यादा बड़ा फासला नहीं है। रनों में और बाकी गेंदों में कोई बड़ा फासला नहीं है। Oh, bit of a fumble and it's a boundary. This is not done. This is poor cricket. Shoddy work, sloppy work. Oh my word, that's unbelievable. 116 for 5 it is. One ball left in over number 15. इस ओवर का कोटा आ चुका है, ये भली बात ही जानते हैं आदित्य। ये मंसूबे कुछ ठीक नहीं नजर आते हुए आदित्य के टीम जॉली जिमखाना के लिए। चले बस इसी सिंगल की तलाश में थे, उस सिंगल को लेकर अपनी टीम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और स्ट्राइक भी अपने पक्ष में रखी है। 15 ओवर्स की समाप्ति पर 117 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। अपनी टीम का रुस्तम प्लेयर साबित होते हुए आदित्य सिंह, और उतना ही अच्छा क्रिकेट खेला है जयराज ठक्कर ने भी। आदित्य सिंह एनएससीआई की तरकश का वो विक्रमादित्य तीर है जिससे जॉली जिमखाना को धाराशायी किया जा सकता है। अभी भी बड़ा मौका बना हुआ है टीम जॉली जिमखाना के लिए, लेकिन गत 10 मिनटों में 10 से 15 मिनटों में ये रुख बदलता हुआ, मैच करवट लेता हुआ, मोमेंटम टीम एनएससीआई के पक्ष में नजर आता हुआ। देखना है कि मैच के इस मोड़ पर अब किस नुमाइंदे की आजमाइश होती है अगले बॉलर के रूप में। 117 पे 5, 30 गेंदों में मैच को जीतने के लिए केवल और केवल 42 रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट है 8.4। आप स्वयं ही अंदाजा लगाइए कि किस दिशा में यह मैच आगे प्रस्थान करता हुआ। अपनी मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पाके दिखा, लिख दे अपनी कामयाबी की कहानी और किस्मत को बोल है दम तो मिटा के दिखा। वो वाला रवैया आदित्य सिंह और जयराज ठक्कर ने अपनाया हुआ है। ओ क्या कैच लिया है, शायद ये कैच के साथ मैच ही लिया है, पता नहीं। आकाश ने उस शानदार कैच को अंजाम दिया। 8.5 out of 10 for that catch. Shubham Vaidya picks up that crucial wicket, the key wicket of Aditya Singh. Exactly what the doctor ordered for team Jolly Gymkhana. They are back in the game. Back in the game, ladies and gentlemen, boys and girls. आदित्य सिंह ने मैदान में उतरकर खलबली मचा दी थी, अपनी टीम को जीत के दरवाजे तक ले जाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन दरवाजे के उस पार नहीं ले जाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया पारी।
It's great to see that team Jolly Gymkhana is looking to take the fight to the enemy camp. बिल्कुल सज्ज हो चुकी है टीम NSCI के साथ दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है. उस पार्टनरशिप के चलते जयराज और आदित्य ने एक बाईपास रूट बनाया था. Aditya had such a good repertoire of shots, unfortunately getting out at the wrong time for team NSCI. That will kick this match alive once again. What a good delivery now. What a good delivery. The new man in, that is Sanjay Bora. Jairaj Thakkar on to 21 of 30 balls. 27 balls and 42 required. The required run rate 9.33. The match has once again taken a U-turn. What a fine catch there by Akash to see the back of Aditya Singh. Team Jolly Gymkhana will be more than happy to see the back of Aditya. That's going to be a big sigh of relief. बड़ी राहत की सांस ली है टीम जॉली जिमखाना ने आदित्य के उस विकेट के साथ. अच्छी गेंद, शिकंजा कसती हुई फिर से एक बार इस मैच में हल्का सा मोमेंटम अपने पक्ष में ले आती हुई टीम जॉली जिमखाना. The fortunes in this second semi-final match have swayed from one team to the other. One more wicket in this over. One more important wicket. हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाओ वो जिगर मुझ में नहीं है. निकला हूं तलाश में उसको पाना है, बिन पाए लौट जाओ ये सब्र मुझ में नहीं है. ये वाला रवैया दर्शाती हुई टीम जॉली जिमखाना. What a fantastic rear guard action. Just look at the way they are holding on to that element of self-belief. Just look at the way they have got back into that winning saddle. 24 balls and 41 runs to win the match. 3 wickets in hand. Required run rate has shot up to 10.25. Momentum back in the camp of team Jolly Gymkhana. We are headed for a thrilling finish. प्रणब औरंगाबाद वाला गेंदबाजी में उतरे हैं. अपने पहले ओवर में 10 रन दिए थे, लेकिन अच्छे गेंदबाज नजर आते हुए. Seven wickets down. A bit of a fumble and they take that extra run. 120 for 7. This is exactly what you do not want. गेंदबाजों को बिल्कुल शत प्रतिशत अच्छी फील्डिंग की बैसाखी देनी होगी, साथ निभाना होगा फील्डर्स ने. दूसरी तरफ अभी भी उम्मीद की किरण जागरूक है. बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद. मामला पेचीदा होता हुआ, मामला उलझता हुआ मैच ने 100% करवट ली है. 5 मिनटों पहले जो मैच टीम NSCI के पक्ष में नजर आ रहा था, अचानक से मानो रुख बदला है. उस चौके के साथ फिर से एक बार मिनी कमबैक करती हुई टीम NSCI. कहीं पर भी मत जाइएगा,
कुछ भी हो सकता है। इस मैच में जोश, जज्बा, जुनून बिल्कुल अपने सीमा चरण पर। बीस में 35 बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 10 के ऊपर है। प्रणब औरंगाबाद वाला 10 गेंदों में 16 रन दिए हैं। हर पहले ओवर में भी 3-4 अच्छी गेंदों को अंजाम दिया था, 2-3 खराब गेंद भी करते हैं। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और दर्शानी होगी। बीस में 35, 19 में 34, 19 गेंदों में 34 बनाने हैं। 19-34। सत्रह ओवर्स के बाद 125 बने हैं। 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 34 बनाने हैं। 18 balls and 34 runs to win the match. Mayur Gori has been brought into the attack to be bowling the crucial 18th over from the commentary box end. The man on strike, that is Sanjay Bora. He scored 8 of 8 so far. And Anis, the new man at the non-striking end. Mayur Gori. 18 में 34 बनाने हैं. 34 to win of 18 balls. Challenging. Right up there in the block hole. Will they look for the second run? No. No chances there. What a brilliant pick-up and throw. Mayur will not mind bowling to the new batsman in this pressure situation. He's just arrived. He's about to play his first delivery. Testing times here for Team NSCI. Just 10 to 12 minutes back, they were in the driver's seat. That wicket of Aditya once again brought team Jolly Gymkhana back into the match. .126 for 7. Short and wide. Not able to adjust his line to the left and right hand combination. Not the ideal delivery to a new batsman who's just arrived. He's in hot waters. It's a pressure cooker situation. That kind of a delivery will not just give an extra run, but the pressure will also release to a certain extent. One more wide. 129. .128. 31 required of 17. 31 of 17 is what they want. 11 and over is what they want from here on. 11 and over.
They need 1 over of 16 to 18 runs. 15 plus is what they want in 1 over. It's all over for this batsman. Anis back in the pavilion. Kunal Thodermal comes into bat in this kind of a heated situation. He's come into bat into a furnace. Team NSCI will have to get hold of the fuel in the reserve tank. Do they have in them to push the envelope a little further? Can they take the match into the last over? Tough times, but yes, it's a funny game, so you never know. But at the moment in the driver's seat to a big extent, that is team Jolly Gymkhana. They are in a jolly good position. They cannot afford to relax. They cannot afford to be complacent. 128 for 8. 16 balls and 31 to win. 15 में 30 बनाने हैं. Required run rate 12 रन प्रति ओवर. हर गेंद में यहां से आगे बढ़ते हुए 2 रन्स बनाने होंगे. 15 balls left and 30 to win. This is the second semi-final of the Mumbai Club Cricket Championship 2025-26, presented by M3C Foundation, not-for-profit initiative. One of the premier clubs championship in the city of Mumbai. The second semi-final. PJ Hindu Gymkhana have taken their place in the grand finale. Will it be Jolly Gymkhana or will it be NSCI? Clean bolt. The 9th wicket falls. Absolutely in the driver's seat. The writing on the wall. Now only a miracle can save team NSCI. केवल एक चमत्कारी टीम NSCI को पोडियम तक ले जा सकता है. पूरी तरह से मैच को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है टीम NSCI विपरीत परिस्थिति में कब्जा जमा लिया है टीम जॉली जिमखाना ने. आखिरी बल्लेबाज के रूप में अदित दानी अब विकेट पे उतरे हैं. मामला पेचीदा है, बिल्कुल उलझ चुका है. एक माइलस्टोन विक्ट्री हो सकती है टीम जॉली जिमखाना के लिए. 13 से 14 मिनटों पहले जब आदित्य और जयराज ठक्कर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से इस मैच को जीत जाएंगे. लेकिन क्या खूब मैच में बने रहे हैं, क्या खूब फायर फाइटिंग किया है टीम जॉली जिमखाना ने, जिसके चलते एक बड़ी जीत के दहलीज पर खड़ी है टीम जॉली जिमखाना. इतना ही कहना चाहूंगा कि अब केवल और केवल एक चमत्कार ही यहां पर टीम एनएससीआई को जीत की कगार तक ले जा सकता है. मुश्किल है, चुनौती भरा है. ब्लॉक होल डिलीवरी, अच्छी गेंद. आखिरी विकेट है. 13 में 29 चाहिए. 13 में 29, 13.5 का रिक्वायर्ड रन रेट और केवल एक ही विकेट महफूज है. सभी कुछ इस वक्त टीम जॉली जिमखाना के पक्ष में नजर आता हुआ.
That's driven downtown into that longer position. The fact that team Jolly Gymkhana was not in a good position when they were batting, that 140 was looking impossible. They went on to score 158, and that is where they made a huge comeback. 15 minutes back, when Aditya and Jairaj were going great guns, Team NSCI was looking the favorite team to get to the podium. But just look at the way the wickets have fallen in a flurry. Hardik Shah, one of their premier medium fast bowler, 131 for 9. They're looking at a heart-wrenching defeat here, Team NSCI. There will be blissful euphoria in one camp and utter dismay in the other. एक तरफ जल्लोश होगा, दूसरी तरफ मायूसी, हताशा. क्या क्रिकेट मैच देखने को मिला है. दोनों ही टीम्स ने अच्छा क्रिकेट खेला है. आदित्य के उस विकेट ने और फिर जयराज ठाकर के उस विकेट ने मैच के रुख को हमेशा के लिए पलट के रख दिया. अब रिक्वायर्ड रन रेट 17 का हो चुका है. 17 का रिक्वायर्ड रन रेट. 10 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 28 रन बनाने हैं. मुंबई क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप 2025-2026 का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच ओपन एज टूर्नामेंट. इस टूर्नामेंट का आयोजित किया है M3C फाउंडेशन नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव. विनीत लुजोड़वाला, मोहित चतुर्वेदी और गणेश राय ये आयोजक है. M3C फाउंडेशन के ट्रस्टीज है. मुंबई का एक प्रीमियर क्लब चैंपियनशिप टूर्नामेंट. पीछे हिंदू जिमखाना ने अपना मुकाम स्थापित किया है ग्रैंड फिनाले में, और इस वक्त ऐसा प्रतीत होता हुआ कि जॉली जिमखाना भी ग्रैंड फिनाले में जा पहुंचेगी. कुछ औपचारिकता अभी भी शेष है. NSCI को एक चमत्कार की जरूरत है. 9 में 27 चाहिए. 9 में 27 और आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी इस वक्त मैदान पर मौजूद है. केवल और केवल औपचारिकता से हम गुजरते हुए ये कहना बिल्कुल लाजमी है. 8 में 27 चाहिए. क्या खूब क्रिकेट खेला है टीम NSCI ने. हर तरह की स्थिति में अपने आप को बैक किया. मैच में बने रहे, डटे रहे. ऑल ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. शानदार क्रिकेट खेला है टीम जॉली जिमखाना ने. शानदार क्रिकेट. 135 मुश्किल लग रहे थे, 158 बनाए. 15 मिनटों पहले विपरीत परिस्थिति में थे जब आदित्य और जयराज इस इनिंग्स को सजा रहे थे, और बिल्कुल अब मैच में जीत के कगार पर, बड़ी जीत के दरवाजे पर तांडव मचाती हुई टीम जॉली जिमखाना. बहुत ही बढ़िया डिलीवरी. 134 पे 9. लेग बाइस के रूप में 1 रन प्राप्त हुआ. बाई के रूप में
6 गेंदों में 25 बनाने हैं, 6 में 25। आखिरी ओवर की जिम्मेवारी मयूर गोरी के कंधों पर है। दाद देनी होगी जॉली जिमखाना के इस रवैये की, जो तेवर दिखाया जॉली जिमखाना ने इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में, वाकई में काबिले तारीफ। ओवर थिंकिंग जोन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। Why on earth would you want to overthink here? चलिए, 5 में 25, 5 चौके से भी काम नहीं बन पाएगा। केवल और केवल औपचारिकता से हम गुजरते हुए कुछ समय पहले ही इस मैच का नतीजा सुनिश्चित हो चुका है। जीती हुई बाजी को बिखेर दिया टीम एनएससीआई ने, जीती हुई बाजी को हारी है एनएससीआई। तो ये अनिश्चितताओं का खेल है और इसी वजह से ये क्रिकेट गेम इतना लोकप्रिय गेम है। तीन में 24, गति में परिवर्तन किया, ड्राइव किया डाउनटाउन। Yes, the grand finale of the MCC Championship 2025-26, presented by M3C Foundation, not-for-profit initiative, is going to be happening between the PJ Hindu Gymkhana and the Jolly Gymkhana. The two new teams make it to the grand finale. GSC and NSCI, both the teams not making it to the grand finale. So we'll have a new champion team. It's all over, ladies and gentlemen, boys and girls. We have our second finalist. It's going to be Jolly Gymkhana. In the end, that will have to be quite a convincing victory. The fortunes kept a swing from one team to the other in the second semi-final match. In the end, team Jolly Gymkhana hold on to that steely nerves to go one up above team NSCI and get to the podium. The two finalist teams, it's going to be Jolly Gymkhana and the PJ Hindu Gymkhana. This is your host and host, Nishat Kora, signing off on behalf of the M3C Foundation. The MCC Championship 2025-26, the two finalist teams have been sealed. That's the seal on the deal. PJ Hindu Gymkhana versus Jolly Gymkhana. This is your host and host, Nishat, signing off. Good night, God bless, take care, Shabba khair.